स्टेज ओके 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है सीबीएसई की है इन दैट chapter number 1 food and its sources I have completed chapter number 2 component of food that one also I have completed chapter number 3 fiber to fabric ये भी हमारा क्लास में हो गया है ओके यू कैन परचेस लेटर ऑन बेटा जब अवेलेबल होगा तब परचेस कर लो देवश्री देन तब तक मैंने जो पीडीएफ शेयर की है उसके जेरोक्स कर लो जब तक तुम्हें बुक नहीं मिलता है देन नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 4 sorting the material we have completed chapter number 5 separation of substance that one also we have completed chapter number 6 that one also we have completed and right now 2 days before I have started chapter number 7 clear ओके आप आपके पास कोलिन्स का बुक नहीं होगा तो कौन सा भी जो सीबीएसई का बुक है वो आप ओपन कर सकते मे बी आपके टेक्स्ट बुक में भी ये चैप्टर प्रेजेंट होगा यू कैन यूज फ्रॉम दैट वन आल्सो ओके नेम ऑफ द चैप्टर इज थिंग्स अराउंड अस एंड एनसीईआरटी की बुक में उसका हेडिंग क्या है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग एनसीईआरटी में उसको डिफरेंट नेम दिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ living thing okay so chapter number 7 जो न्यू स्टूडेंट आए उनको लगेगा मैडम ने डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 कैसे स्टार्ट किया कैसे मींस ऑलरेडी हमारे 6 चैप्टर हो गए हमारे बैच 15 अप्रैल को 16 अप्रैल को बैच स्टार्ट हुई थी बीच में सम डेज 12 13 डेज वैकेशंस दिए थे ओके दैट्स व्हाई वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6 ओके क्योंकि बैच तो कब की चालू हो गई उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं लेक्चर्स आप यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हैं नहीं तो आपने ऐप डाउनलोड किया होगा नाउ यू आर हैंडी विथ ऐप सबको समझ में आ गया ऐप में नोट्स है ऐप में वीडियो लेक्चर्स है देन 5th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स है 5th स्टैंडर्ड के कुछ 3-4 टेस्ट है देन 6th स्टैंडर्ड के कुछ टेस्ट है ओके न्यू स्टूडेंट आपको भी ऐप डाउनलोड करना है that process I will tell you later on okay now continue to our chapter that is things around us things around us yes okay things around us so in our surrounding there are different type of things are present and that things are broadly classified into two main groups that is living thing and next one non-living thing okay so things which are present in our surrounding they are broadly classified into two groups first group that is the living thing and second group that is the non-living things okay so in this chapter we have to study the characteristic or the points which tell us difference between the living and non-living okay बच्चों को टेस्ट ज्यादा याद आ रही है डेट कितनी 12 14 को हम टेस्ट लेंगे ओके चैप्टर नंबर 5 की टेस्ट बाकी है ना 4 तक टेस्ट हो गया आई थिंक हमारे चैप्टर नंबर 5 की टेस्ट बाकी है ओके 14 को हम टेस्ट लेंगे चैप्टर नंबर 5 की ओके क्लियर डन चैप्टर नंबर 5 कौन सा है यस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस 14 को मैं टेस्ट लूंगी क्लियर ओके सो थिंग्स अराउंड अस in that characteristic of living thing and yesterday we have discussed some characteristics so which one is the first characteristic structural organization living thing body is made of yes they have cellular structure very good living thing की body किससे बनी है cellular structure so first point that is structural organization in the living thing in their body cells are present tissue present organ systems are present and all are present in the body of organism all are present in the organism
So this is the first characteristic, that is structural organization. Structural organization. Okay, or it is also called cellular structure. Then next one, which one is the second characteristic? Living thing need the food. Living thing need the food. What about the non-living thing? Living thing need the food. Non-living thing do not need the food. Then third characteristic, living thing. Yes, yesterday I have taught you living thing show growth. Living thing में क्या होती है? Growth. And growth is different in the plants also and animals also. In the plant, growth occur throughout the life. Okay. What about the animal? After certain stage, growth stable or less or stop. Then next characteristic, that is living thing respire. Okay, next characteristic, that is living thing respire. So there is a difference between respiration and breathing, and different animal having different respiratory organ. That point yesterday we have discussed. Adiraj, close that door. स्मॉल इंसेक्ट आते हैं लाइट की वजह से, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हमें सीखना है. ओके, लाइट की तरफ स्मॉल इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं. यस. Okay, so a fourth characteristic, that is living thing respire. What about non-living thing? Do not respire. Then next one, fifth characteristic, that is living thing move. Living thing क्या होते हैं? Move होते हैं. Why living thing move here and there? In search of food, in search of shelter, then for breeding, to protect from the. Yes, okay, that's why living thing move. Okay, then so structural organization, first characteristic, living thing need the food. Second characteristic, living thing shows the growth, living thing respire, and living thing move. So those are the 5 characteristics which we have already discussed. Now next characteristic, that is living thing responds to stimuli. Okay, living thing respond to stimuli. Okay, the living thing responds to stimuli. Then non-living thing. What about the non-living thing? Do not respond to stimuli. But you should know the meaning of response. Okay, and next one you should know about the stimuli. इसको stimuli बोलना है and इसको response बोलना है. So first one is definition of response: reacting to a change in the surrounding, that is called response. If in a surrounding there is a change happens, okay, if in a surrounding there is something change, then our body give the response, our body react. Okay, that one is called response. So reacting to the change which are happen in our surrounding. Okay, react karna, reacting to the change which are happen in our surrounding, that is called response. Suppose suddenly I hold any hot object, then I release that object very fastly. Okay, तो मैंने क्या किया? Response. I have given the response. Okay, क्या हो गया? नॉर्मली हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकते हैं, बट रिएक्टिंग टू द चेंज इन द सराउंडिंग, सडनली आई होल्ड एनी हॉट यूटेंसिल, आई रिलीज दैट यूटेंसिल, तो मैंने क्या कर दिया? रिस्पॉन्स. ओके, सपोज आई एम स्टिचिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ नीडल and needle prick in my finger. I enjoy that process. No, I am giving the response. Oh my God, I go, Baba go. अपन काय करतो? Response. So that thing is response. So
reacting to a change in the surrounding. सराउंडिंग में जो भी चेंज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट कर. बेटा ऑटोट्रॉफ मीन्स खुद के फूड खुद बनाते हैं. हेटेरोट्रॉफ मीन्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड. मैंने इमेजेस शेयर किए थे ग्रुप पे. शॉर्ट डेफिनेशन, शॉर्ट बट स्वीट डेफिनेशन दी थी. हैव यू सीन दैट इमेजेस? मैंने ग्रुप पे इमेजेस शेयर किए थे. ऑटोट्रॉफ मींस व्हिच मेक देयर ओन फूड, जो खुद का फूड खुद बनाते हैं. हेटेरोट्रॉफ मींस which do not make their own food, it is depend on the other plants and animal, they are called heterotrophs. Now coming to our point, living thing respond to stimuli, reacting to a change in the surrounding, that one is called response. Change which are present in around our surrounding, okay, and a change around us makes us to respond, that is called stimuli. In our surrounding there are the different changes are present, and these changes, okay, these changes respond us, okay, changes around us that make us to respond. चेंजेस हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई. चेंजेस अराउंड अस दैट मेक अस respond to it, that is called stimuli, and all living thing respond to the stimuli. Okay, जो living thing है सभी living thing stimuli को response करते हैं. Okay, I have right now just given two examples. देखो, I am stitching something and needle prick in my hand. हम क्या करते हैं, response. Okay, suddenly I have hold any hot object, I give the response. When you are walking at night and suddenly any light flash on your eyes, you close your eyes. Okay, so वो भी क्या हो गया, response. Okay, at the evening time, small insects, especially rainy season में देखो, rainy season के small insects are attracted toward the lights. Okay, हम देख रहे, रोज हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं. Okay, small insects are attracted towards the light, so that one is also response to stimuli. Okay, then suppose when you touch the touch me not plant, that one is also called, उसका another name क्या है, mimosa. Have you seen touch me not plant? उसको आपने टच किया तो उसके leaves क्या हो जाते हैं, fold हो जाते हैं, close हो जाते हैं. You have seen that plant in Marathi. We called it as a lajaru, and in Hindi lajwanti ऐसे कुछ तो बोलते हैं. Yes ना शिवांश, लजवंती बोलते हैं ना उसको, टच मी नॉट को हिंदी में. Okay, so have you seen touch me not plant? देख लो जिसने नहीं देखी होगी. When we touch that plants, okay, it fold its leaves. Okay, तो हमने टच किया, ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स, एंड प्लांट ने लीव्स क्लोज कर लिए, ये क्या हो गया, स्टिमुलाई. ओके, सो लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. Okay, then animal also respond to the stimuli. So there are the different type of stimuli. For example, heat is stimuli, cold is stimuli, smell is stimuli, sound is stimuli. Okay, so those are the different type of stimuli, and living thing, plants, animal give response to the stimuli. See right now मैंने एग्जांपल दिया, हम डार्क नाइट में चल रहे एंड सडनली कोई गाड़ी का फ्लैश लाइट आपके आईज के ऊपर आए तो आप क्या करते हैं, आईज क्लोज कर देते हैं. सो you have given the response. Even when you see the pani puri, there is a watering in your mouth. That one also example of response to stimuli. Okay. Okay. There are so many example of response to stimuli. Okay. So understand the characteristic response to stimuli. Okay. So may I repeat again, reacting to a change which are happen in our surrounding, that is called response, and change around us that make us to respond, that is called stimuli. Okay, so कौन-कौन से stimuli, heat is stimuli, cold is stimuli, touch is stimuli, smell is stimuli, sound is stimuli.
Okay. Now, next characteristic of living thing, that is living thing reproduce. Seventh number characteristic. Okay, next one, seventh number characteristic, that is living thing reproduce. Reproduce means reproduction. Okay, reproduction APA, living thing reproduce or living thing reproduction. So what is the definition of reproduction? The process by which living thing produce young one of their own kind. Okay, young one of their own kind, that is called reproduction. Living thing reproduce another living thing like themselves, that is called reproduction. Suppose one living thing है, it reproduce another living thing like themselves, that is called reproduction. Or the process by which living thing produce young one of their own kind, that is called reproduction. And most of the plants and animal reproduce. See, plants में reproduction होता है, yes. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, yes. ओके, जो भी लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं. नाउ आई हैव दिस पेन. पेन इज नॉन लिविंग. ये रिप्रोडक्शन करता है पेन? नो. नॉन लिविंग थिंग, non-living thing do not reproduce and living thing reproduce. Now plants में two types से reproduction होते हैं. First one, plants reproduce with the help of seed. Okay, कोई भी seed है उसको आप germinate करो, plants reproduce हो जाएंगे. And then next one, without seed. Okay, which plants without seed भी germinate होते हैं. Okay, so reproduction, there are the two type of reproduction in the plants. Plants with the help of seed and without seed. So without seed, they are reproduced by the different method. So they are reproduced with the help of root, with the help of stem, with the help of leaf. Okay, then next one, yes, no, root, stem, leaf. Okay, so उसमें seed नहीं use होता है. Okay, they are okay, yes. So they are reproduced with the help of root, then with the help of stem, and with the help of next one, leaf. So root, carrot, radish, turnip, beetroot, sweet potato. Okay, those are reproduced with the help of roots. उसका directly roots से लगाते हैं. Then stem, most of the plants are reproduced with the help of stem. Example is potato, turmeric, ginger, then clocosia, onion, sugarcane. Those are reproduced with the help of stem. उनका reproduction होता है, but with the help of stem. Then एक कंद असतो एक प्रकारचा. ओके, इमेज बघून दिसतो. बीटरूट टाइप. कोलोकेसिया. ओके, बीटरूट टाइप असतो. एकदा चेक डायग्राम बघून घ्या किंवा मी डाउनलोड करून. हाँ, yes. Okay, now next one, some plants are reproduction means, रिपीट करती हूँ, तनुश्री, देवश्री, इधर देखो. लिविंग थिंग reproduce another living thing, that is called reproduction. Okay, the process by which living thing produce young one of their own kind, that is called same kinds. डॉग है तो डॉग ही रिप्रोड्यूस करेगा, कैट है तो कैट ही रिप्रोड्यूस करेगा, हॉर्स है तो से उसको बोलते हैं सेम काइंड. Okay, the process by which living thing produce young one of their own kind is called reproduction. Now plants में reproduction होता है, yes. Animal में reproduction होता है, yes. In short, living thing में reproduction होता है, yes. What about non-living thing? Do not reproduce.
Now living thing में different way है. First one plants with the help of seed reproduce हो गए and plants without seed भी हो गए. तो विदाउट अपने फ्लावरिंग प्लांट्स देखे रोज रोज का स्टेम कट कर दिया न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. हिबिस्कस स्टेम कट कर दिया न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. हैव यू सीन द फ्लावरिंग प्लांट? आपकी मम्मी क्या करती है उसका स्टेम कट करती है दूसरी जगह पे लगा देती है. सो देयर आर द सम प्लांट्स व्हिच रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ये चंपा चाफा देन मोगरा इन सब के फ्लावरिंग गार्डन में जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उसके स्टेम कट करते हैं लगा देते हैं एंड न्यू प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस. न्यू प्लांट ग्रो होते हैं. हैव यू सीन गार्डन में जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रो होते हैं उसके स्टेम कट करते हैं एंड उसको दूसरी जगह पे लगा देते हैं. देन नेक्स्ट वन विद द हेल्प ऑफ लीफ. there is a one example that plants are reproduced with the help of leaf. Is it possible leaf से कभी reproduction हो सकता है? Yes, bryophyllum. Okay, so on the leaf of the plant there are small birds are present. On the leaf of plants there are small birds are present and when that birds fall down in the soil, ये birds soil में आते they it reproduce new plant and example is bryophyllum. Okay, उसका example क्या है? Bryophyllum. Bryophyllum is the plant which is reproduced with the help of leaf. Okay, which is reproduced with the help of leaf. Okay. Now next one animals. Animals में भी reproduction होता है. Yes. So there are the two ways of reproduction in the animal. That is viviparous and next one oviparous. Okay, आपका pronunciation मेरे से थोड़ा सा different भी हो सकता है. Don't worry. Okay, so animals that lay the eggs are called viviparous. Okay, so those animals which lay the egg, जो egg से reproduce होते हैं, those animal which are reproduce या स्पोर से भी होते हैं, स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. ओके, प्लांट में स्पोर से भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस. ओके, नाउ सो एनिमल दैट ले द एग, that animal is called 1 minute. Okay, animals that lay the egg are called oviparous. Okay, animal which are reproduced from the egg. ध्यान में कैसे रखना है, एग को क्या बोलते हैं? ओवम. ओवम. एग को क्या बोलते हैं? ओवम. ओवी. ओवी. ओके, एग को क्या बोलते हैं? ओवम. सो द एनिमल दैट ले द एग्स or they are reproduced from the egg, they are called oviparous. Whereas example is कौन कौन से आपको पता है कि जो एग जैसे hen, birds, ostrich. Okay, okay, birds. Okay, maximum birds are reproduced with the help of egg. Okay, then ostrich. Okay, now next one that is viviparous. The animal that give birth to their young ones are called viviparous. The animal which gives birth to their young ones. Okay, the animal which gives birth to their young one, that animal is called, that type of reproduction. Okay, or that animal ते बरोबर आहे. पण सध्या फक्त हेच 2 पॉइंट ह्याच चॅप्टर मध्ये मी तुम्हाला शिकवणार आहे, सगळं शिकवणार आहे. फर्स्ट फिशेस घेणार आहोत आपण, एम्फिबियन्स घेणार आहोत, रेप्टाइल्स घेणार आहे, ओके मॅमल्स ह्या चॅप्टर मध्ये मी शिकवणार आहे. पण सध्या तू फक्त एवढ्या 2 गोष्टी लक्षात ठेव. ओके, सो फर्स्ट वन इज विविपोरस, कारण काही मॅमल्स ओविपोरस पण आहे, एक्सेप्शन. प्लॅटोपस, प्लॅटोपस एक्सेप्शन पण आहे. सध्या तू फक्त नाउ यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द 2 टाइप ऑफ
reproduction. There are the two types of reproduction, oviparous and next one viviparous. Those animals which give birth to their young ones, they are called viviparous. Good example is human, okay, and mammals. जो भी mammals है, okay, वो सभी इसमें आते हैं viviparous. Okay, and oviparous, those animals which are reproduced with the help of egg. Egg मतलब ovum. ध्यान में किसे रखना है? egg. Egg मतलब ovum. And they are called oviparous animal. Snake egg ने होते reproduce. Okay, so लँडवरचा आहे म्हणजे काय राहणार लंग्स टेरेस्ट्रियल आहे. ओके, सो लिव्हिंग थिंग okay, good. Okay, so understand about the reproduction characteristic. Is it okay? Just firstly show me your thumb. आपको समझ में आ गया reproduction characteristic? My sound is okay. Om, Rudra. Just show me your thumb firstly. So living thing reproduce. And what about non-living thing? See, I have the duster. Duster non-living thing है. Reproduce करता है? No. Okay. So may I repeat again? First characteristic: living thing having structural organization. Then living thing need the food. Non-living thing do not need the food. Living thing show the growth. Non-living thing do not show the growth. Living thing respire. Non-living thing do not respire. Living thing move. Non-living thing do not move. Living thing respond to stimuli. Non-living thing do not respond to stimuli. Living thing reproduce. Another living thing like themselves. Okay. How are? It's a aquatic. No, it's a naturally comes. I have to also find out that answer. Okay, so living thing respond to stimuli and a living thing reproduce, and non-living thing do not reproduce. Now, next characteristic, that is living thing having definite lifespan. Living thing have definite lifespan. लिविंग थिंग के पास क्या है? डेफिनाइट लाइफ स्पैन है, और वी से दैट लिविंग थिंग हैविंग द फिक्स लाइफ स्पैन. ओके, लिविंग थिंग का लाइफ स्पैन कैसा है? फिक्स है. सो ऑल लिविंग थिंग टेक द बर्थ, दे ग्रो इनटू एडल्ट, become old, and finally they die. So the times of an organism from its birth to death, that time period is called lifespan. लिविंग थिंग जो बर्थ से लेके डेथ तक जो बीच में का टाइम पीरियड है, that one is called lifespan. And the entire process is called life cycle of the organism. So different animal having the different lifespan. Today's homework is you have to make the list of some animal and their lifespan. For example, human being approximately lifespan कितना होता है? 60 to 70. Okay. Okay. Then tortoise. Okay. Yes, 500 years. Okay, like this you. Yes. Yes.
Okay, so my point is different animal having the different lifespan. Okay, जो भी animals से okay, very good. Different animal having the different lifespan. Okay, and lifespan means the period from birth to death. That one is called lifespan. What about non-living thing? Do not having definite lifespan. Non-living thing का lifespan है ताजमहल कब बना है? Okay, lifespan है death हो गया. Non-living thing, non-living thing do not having definite lifespan, but living thing having the definite lifespan. Okay, understand? Now, next characteristic, that is living thing excrete. Okay, next characteristic, that is living thing excrete, or it is also called excretion. Okay, living thing excrete, or it is also called excretion. Okay, so excretion means to remove the waste product. Simple definition: to remove the waste product, that is called excretion. Okay, so the process of getting rid of the waste product by the living thing, that is called excretion, or the process in which waste products are thrown out of the body time to time, that process is called excretion. Okay, now if that these waste products are removed from the body time to time, but if that waste product is not removed time to time, it collect in our body, then it may be fatal. Fatal means death. Death भी हो सकती है. Okay, so the waste product are thrown out regularly from the body, and if they are collected, accumulated in our body, then it will be dangerous for our body, or it may be fatal. Okay, so animals, प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, एनिमल्स भी एक्सक्रीशन करते हैं. So first one, that is animals. So in the process of respiration, we are excreting carbon dioxide out of the body. अब इसी चैप्टर में मैंने आपको रेस्पिरेशन कल ही सिखाया. यस ना, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन सिखाई मैंने आपको कल. सो एनिमल एक्सक्रीट first of all carbon dioxide from the body. Then next one, animal excrete undigested food. जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो भी एनिमल्स बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं. Then next one, that is we have sweat. Okay, next one we have sweat. Okay, that one is also excretory product. Yes, yes, very good. Digestion. Yes, ingestion, digestion, then absorption, then assimilation, and then digestion. No, here is in your textbook it is given. Okay, see, animal excrete the waste product such as undigested food, carbon dioxide which is formed during the process of respiration, and then urine and sweat. Then next one, urine and sweat. So these three are the excretory product of animals. Okay, so animal excretion करते हैं. Yes. Plants excretion करते हैं. Yes. So excretion is the characteristic of living thing. See, I have the pen, I have the charger, I have the screwdriver. ये सभी excretion करते हैं क्या? No, because those are non-living thing, and non-living thing excretion करते हैं? No. Okay. Beta, you have to type the message. Riya Gandhi, firstly on your camera. Compulsory camera on चाहिए. Okay, all student compulsory on. रोज मुझे क्या सेम चीज बतानी पड़ती है? कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो. It's your responsibility to on the camera, and it's a characteristic of sincere students when you on the camera. Okay. So excretion, may I repeat, the process in which
waste products are thrown out of the body, that is called excretion. So animal excrete, yes, okay, animal excrete undigested food, carbon dioxide during the process of respiration, urine, sweat. So which are the excretory organ? Lungs is excretory organ because lungs क्या excrete करता है? Carbon dioxide. Skin is excretory organ, sweat, and kidney is the main excretory organ. क्या excrete करते हैं? Urine. Okay, kidney is main excretory organ. क्या excrete होता है? That is the urine. So lungs, skin, kidney are the organ which help in the excretion of waste product from the body. Now next one, plants. Plants also excrete in the form of gum, in the form of rubber, latex, resins. Okay, gum, rubber, latex, okay, are the रबर फॉर्म होता है उसका लैटेक्स होता है, लैटेक्स से रबर बनाते हैं हम. जो गम डिंकाचे लाडू खातात ना विंटर सीजन मध्ये, ऍक्च्युअली इट्स एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स. नीम, बाबूल, okay, neem, babul, acacia, those are the plants which gives the gum. Okay, बट सम प्लांट्स का ही गम हम खाते हैं, अदर प्लांट्स का गम जो हम गम यूज करते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं. सो गम, रबर, लैटेक्स. ओके, लैटेक्स से रबर मिलता है. Yes. Okay. Then next one, that is resins. So those are the excretory product of the plants. Plants के excretory product कौन से हैं? First one is gum. Then next one latex. Latex of rubber. Latex of मनुष्य cheek होते हैं. Cheek. Okay. And then next one resins. Okay, so those are, ये सब क्या हो गए? Okay, so those are the excretory product of the plants. ये क्या हो गए? Plants के excretory products हो गए. So is it okay about the excretion? Yes, ma'am. Okay. Now plants such as eucalyptus, then lemon, tulsi produce the waste. They also produce the waste, but that waste is in the form of oil and which we are using for the different purpose. Eucalyptus means नीलगिरी oil. Okay, नीलगिरी oil पता है जब common cold वगैरह होते हैं then नीलगिरी oil use करते हैं. Okay, even मेहंदी में भी add करते हैं नीलगिरी oil. यूकेलिप्टस मीन्स नीलगिरी ऑयल. सो ये जो यूकेलिप्टस है, लेमन है, तुलसी है, इसमें से भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड दैट वन इज यूजफुल. Okay, and those are essential oil which is useful to the human being because of their medicinal properties. Eucalyptus means nilgiri oil. Today discuss with your mother about the uses of nilgiri oil. Okay, नो एक्सटर्नल. सी मुझे जनरली कॉमन कोल्ड हुआ ना तो एंकर चिप पे डाल के उसका स्मेल लेते हैं इनकेलेप्टस ऑयल का. ओके, सो दस आर द मेडिसिनल वैल्यू. उनका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो कौन से फॉर्म में है? ऑयल फॉर्म में है एंड इट इज यूज एज द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. So understand about the next one, that is excretory product of plant like eucalyptus, lemon, tulsi. They excrete the oil and that oil is useful. Okay, now we have discussed the 9 characteristics. हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए प्लांट्स के? 9 कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर लिए. जस्ट 1 मिनट.
3rd June ला स्टार्ट केला क्लासेस स्टार्ट. मॅडम सेम थिंग था ना. ठीक आहे, ओके. क्लास संपला मी तुम्हाला जॉइन करायला. Okay, so we have learned the 9 characteristics of living thing, and this characteristic make the difference between living and non-living thing. So first characteristic, living thing. Living thing body is made up of cell, that is called cellular structure, and that also called structural organization. Non-living thing do not made up of cell. Then living thing need the food to stay alive. Non-living thing do not need the food. Then next one, living thing shows the growth. Non-living thing do not. So living thing shows the growth. Non-living thing do not shows the growth. Living thing respire. Non-living thing do not respire. Living thing shows the movement. Move. Living thing move. Non-living thing do not move. Living thing respond to stimuli. Non-living thing do not respond to stimuli. Living thing excrete. Non-living thing do not excrete. Living thing reproduce. New offspring. Non-living thing do not reproduce. Living thing have birth and death, that is called lifespan, and non-living thing do not having the lifespan. So those are the characteristic between the living thing and non-living thing. ये characteristic हमें difference बताता है, that is living and okay. Who is अधिकांत कोलते? Who joined from अधिकांत कोलते? कौन मैसेज? मैं आपको otherwise I will completely log to. ओके, किसी ने चैट पे टाइम पास किया तो मैं आपका चैटिंग भी बंद कर दूंगी. इज इट ओके? किसी ने तो अभी कोई तो मैसेज डिस्प्ले किया है. अननेसेसरी बिना काम का किसने मैसेज डाला तो मैं आपका चैटिंग फैसिलिटी भी लॉक कर दूंगी. क्लियर? इज इट ओके? So understand the points of living and non-living thing. Okay, now I teach you one short trick, okay, which help you to remind the characteristic of living and non-living. अभी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाली हूँ. सिर्फ अपनी ट्रिक याद कर ली तो आपको सब पूरे कैरेक्टरिस्टिक लर्न हो जाएंगे. एंड देयर इज अ वन ब्रॉड क्वेश्चन ऑन द कैरेक्टर. स्कूल में क्वेश्चन आता ही, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. कौन है अधिकांश कोलते? ये तो कोई मेरा स्टूडेंट है ही नहीं कोलते नाम का. So which are how we memorize, okay? जैसे आपने सोलर सिस्टम की ट्रिक बचपन में सीखी होगी. कौन सी? सोलर सिस्टम की प्लैनेट्स के नेम्स लर्न करने की. बाय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सन अस 9 पिकल्स. नूडल्स भी चलता है 9. वो क्या होगी? ट्रिक होगी. Okay, to memorize the name of the planets. वैसे living thing के characteristic की भी एक ट्रिक है, that is Mrs. Rain CD. Note down. Okay, Mrs. Rain CD. Okay, Mrs. Rain CD. इसमें सभी characteristic learn हो जाते हैं. M for moment. Living thing shows the moment. R for respiration. Living thing respire. S for stimuli. Living thing stimuli. G for growth. Living thing shows the growth. Then R for reproduction. Reproduce. Then E for excretion. Living thing excrete. N for सिखाया है मैंने. N for
न्यूट्रिशन, नीड थोड़ी है बट न्यूट्रिशन. एंड फॉर न्यूट्रिशन, लिविंग थिंग नीड द फूड. यहाँ पे पॉइंट है ना, हमने सेकंड पॉइंट भी सीखा है. लिविंग थिंग नीड द फूड. सो एन मीन्स न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन मीन्स टेकिंग फूड. ओके, एन मीन्स न्यूट्रिशन. सी मीन्स C means singular structure. Yes, इतना इजी था. आपको यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका निक नेम लिखा नहीं, बट कल तो बताया था मैंने सेल्यूलर. सो C means cellular structure. C means cellular structure. D means ओके डेथ. बट आपके इसमें उसको डेथ हेडिंग नहीं दिया है. क्या दिया है? लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन दिया है. क्या दिया है? ओके, सो ये शॉर्टकट ट्रिक है. ओके, यदि ये ट्रिक आपने ध्यान, यस सिट प्रॉपर्ली. सो बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक वी कैन, ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक आपने एक बार लर्न कर ली तो आपके सब कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट की 5 मिनट में आपको सब कैरेक्टरिस्टिक याद आ जाएंगे. ओके, मिसेस ग्रेन सीडी. ओके, अंडरस्टैंड. ये ट्रिक में आपको क्या क्या किसके ट्रिक है? टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. इज इट ओके अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग? Now next one, that is habitat. Okay, yes Sanvi, type the message firstly. Okay, if you have any doubt then type the message in firstly. Next term, that is habitat. Okay, next term, that is habitat. So a natural place where an organism lives and reproduce, that is called habitat. Okay, the natural place where the all organism lives or organism lives. Full form repeat करो. Okay, MRS Mrs. Grain CD. Mrs. Grain CD. Okay, this one is the short trick. M for firstly, M for moment, R for respiration, S for stimuli, G for growth, R for reproduction, E for nutrition, N for nutrition, cellular structure, cellular structure, and D for death, death or death. Another one is lifespan. Okay, now next one is habitat, the natural place where an organism lives and reproduce. It's called habitat. A habitat gives the food, air, water, shelter to the organism, and different animal and plant lives in the same habitat. There are the different type of main two habitat. उसके सब type भी है, but main two है, that is terrestrial habitat, and next one is aquatic habitat. Is it okay, dear students? Is it okay? So tomorrow we continue the remaining points. Okay, tomorrow we continue the remaining points. You have to note down the trick, shortcut trick जो मैंने सिखाई है. ट्रिक आपको नोट डाउन करना है. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो बाय बाय.